बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 10। On hearing these words, the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure as he said, "Young man, the blood money will be paid to you from the people's treasury, and Allah will reward you for this goodness on the day of judgment." पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। Audience means सामाइन, listeners. Joy mean खुशी, happiness. Applause, मुसरत, praise. Beam, दमकना, चमकना, glow. Reward, सिला देना, recompense. Goodness, नेकी, kindness. Treasury, खजाना, fund. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। On hearing these words, ये अल्फाज सुनकर the audience present in the court gave cries of joy and applause. अदालत में मौजूद सामाईन में खुशी और तालियों की सदाएं गूंज उठीं। खुशी के साथ उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। And the face of the caliph beamed with pleasure as he said, और खलीफा का चेहरा भी खुशी से चमक उठा जूँ ही उन्होंने कहा, क्या कहा कि यंग मैन द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू। ए नौजवानों से मुराद कौन थी? वो दो मुद्दई जो थे, जिस बूढ़े के दो बेटे थे, उनसे मुखातिब होकर कहा कि ए नौजवानों, तुम्हें खून बहा अदा किया जाएगा फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, बैतुल माल से, यानी कि अवाम का जो ख़जाना होता है वहाँ से आपको, जो रियासत के अंडर होता है, आपको वहाँ से खून बहा की रकम अदा की जाएगी। एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू फॉर दिस गुडनेस, और अल्लाह तुम्हें इस नेकी की जज़ा देगा। कब देगा? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बरोज़े क़यामत के दिन। अब पूरी लाइन को पढ़ते हैं। ऑन हेयरिंग दिस वर्ड्स द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट गेव क्राइज ऑफ जॉय एंड अपलॉज, and the face of the caliph beamed with pleasure as he said, "Young men, the blood money will be offered to you from the people's treasury, and Allah will reward you for this goodness on the day of judgment." ये अल्फाज सुनकर अदालत में मौजूद सामाईन में खुशी और तालियों की सदाएं गूंज उठीं और खलीफा का चेहरा खुशी से चमक उठा जूँ ही आपने कहा, जूँ ही इनके खलीफा ने कहा, ए नौजवानों, तुम्हें बैतुल माल से खून बहा की रकम अदा की जाएगी और अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन इस नेकी की जज़ा देगा। ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सिंपल इंग्लिश का। सो हम सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। On hearing these words, the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure as he said, "Young man, the blood money will be paid to you from the people's treasury, and Allah will reward you for this goodness on the day of judgment." तो सिंपल इंग्लिश है कि when the sons of the dead old man announced their will, everyone in the court was delighted. क्राइज ऑफ जॉय के लिए डिलाइटेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया। एंड बिकेम हैप्पी, द कैलिफ्स फेस वाज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, एंड ही सेड दैट दे वुड बी पेड ब्लड मनी फ्रॉम द फंड ऑफ द स्टेट। ही सेड दैट अल्लाह वुड आल्सो रिवॉर्ड देम फॉर द नोबल डीड ऑन द फाइनल डे। और इसी के साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 10 भी मुकम्मल होता है।